किसी व्यक्ति के निर्माण का स्वर्णिम समय यौवन काल होता है, जिसमें वह आने वाले लंबे जीवन के लिए शरीर, मन और आत्मा का निर्माण और विकास करता है। इसी नींव पर अपने जीवन का मजबूत भवन खड़ा करता है और उसका भोग करता है। किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला और ऊर्जा उसकी युवा शक्ति ही होती है। यही उसका आत्मबल और इच्छा शक्ति भी होती है। इसीलिए कहा गया है, वीर भोग्य वसुंधरा। राष्ट्र निर्माण के ताने बाने में यौवन के ही धागे होते हैं। अतः जो राष्ट्र अपनी इस ऊर्जा का संरक्षण और संवर्धन करता है, वह विकास के उच्च शिखर पर पहुंचता है। राष्ट्र के कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, तकनीक, राजनीति रूपी चक्के को यही युवा शक्ति, ऊर्जा व गति प्रदान करती है। यह राष्ट्र की रगों में बहने वाला गर्म खून है, जो उसे चैतन्य और प्रगतिशील बनाता है। भौतिक व आध्यात्मिक दोनों के विकास में इसी ऊष्मा का तप सक्रिय रहता है। इतिहास साक्षी रहा है कि जब किसी राष्ट्र की धुरी लड़खड़ाई है, युवा शक्ति ने आगे आकर अपने पुरुषार्थ से उसे सुदृढ़ बनाया है। आज अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे नशा, फैशन परस्ती, पाश्चात्य जीवन शैली, आस्था संकट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी देश की युवा शक्ति पर आरूढ़ हैं। आज युवा शक्ति को आत्मबोध एवं अपने सांस्कृतिक गौरव से परिचित कराना समय की मांग है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 35 वर्ष तक की उम्र की 65% आबादी है। यह युवा शक्ति जिधर चल पड़ेगी, देश भी उधर ही चल पड़ेगा। अतः देश का भविष्य अब युवाओं के हाथ में है। यह युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति बनकर राष्ट्र को समृद्धि, उन्नति एवं प्रगति के मार्ग पर ले जाएगी। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युवा की अद्भुत परिभाषा दी है। युवा वो है असंभव जिसके शब्दकोश में नहीं, जो बाधाओं को चीरकर अपना मार्ग बनाता है, जो परिस्थितियों का दास नहीं, उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता एवं स्वामी है, जो भाग्य नहीं, अपने कर्म पर विश्वास रखता है, जो उमंग, उत्साह, जोश से जीता व सुनहरे भविष्य के सपने देखता है, जो स्वयं सब कुछ करके गौरव अनुभव करता है और विश्व में कुछ अनूठा करना चाहता है। असमंजस व अवसाद की स्थिति से गुजर रही युवा पीढ़ी को दिशा देने का काम एक चिंतक ही कर सकता है। नमस्कार। वर्ष 2006 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, मिले और इन दोनों चिंतकों ने मंथन किया कि युवा पीढ़ी को एक सृजनात्मक मंच देने की आवश्यकता है जो राष्ट्र निर्माण में सहायक हो। यहीं से दिया की नींव रखी गई। I am indeed delighted to participate in the second convocation of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. I am very happy that this institution has been created with a motto of developing the divine culture, which is of utmost importance to us while we are on the path of transforming India into a prosperous, happy and peaceful society. We have the responsibility of transforming India into a developed nation before the year 2020. It is an endless journey through knowledge and enlightenment. Such a journey opens up new vistas of development or humanism, where there is no scope nor room for pettiness, disharmony, jealousy and hatred or enmity. It transforms a human being into a wholesome whole, a noble soul and an asset to the universe. God bless you. जिस तरह एक दिया अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है, दिया भी इस देश के युवा मन से अंधेरे को दूर करने का स्वप्न लेकर चला है कि प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर, विनम्र, संवेदनशील दिव्य युवाओं को तैयार करने के लिए प्रयासरत है, जिससे राष्ट्र निर्माण की रचनात्मक गतिविधियां चलाई जा सकें, दिव्य भारत का पुनर्निर्माण हो। इसका लक्ष्य युवाओं की क्षमताओं का विकास कर दिव्य भारत का निर्माण करना है, जिसमें व्यक्ति, परिवार व समाज का उत्थान हो।
दिया युवाओं के सपनों में आदर्शवाद लाकर उनकी वैचारिक प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। वैज्ञानिक अध्यात्म के माध्यम से युवाओं में देवत्व की अभिव्यक्ति, दुनिया में सद्भाव के साथ सतयुग की वापसी इसका परम उद्देश्य है। इस तथ्य की महत्वता समझते हुए वो डॉक्टर कलाम के भारतवर्ष को वर्ष 2020 तक एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के स्वप्न की ओर युवा शक्ति को अग्रसर करने के लिए दिया इस महान राष्ट्र के युवाओं के लिए एक आंदोलन है जो मजबूत सिद्धांतों और यथार्थवादी लक्ष्यों पर आधारित है। जो लोग दिल और दिमाग से युवा हैं एवं जो एक नए भारत की परिकल्पना के हमारे स्वप्न से सहमत हैं, उम्र, जाति या धर्म की परवाह किए बगैर हमसे जुड़े। मुझे विश्वास है गायत्री परिवार के दिया आंदोलन के माध्यम से देश के युवाओं में वो संवेदनाएं प्रकट होगी, सामाजिक जिम्मेवारियां प्रकट होगी, एक साहस की वृत्ति पैदा होगी, कुछ करने के लिए, कुछ कर करके दिखाने के लिए जीवन को लगाने की इच्छा होगी। देश के लिए जीना सीखो इस मंत्र के साथ। इस आंदोलन से जुड़कर आपके जीवन में खुशी एवं एक नए उत्साह का संचार होगा। साथ ही अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। आज 98th ज्ञान सभा एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारे जो भी दर्शक है फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी का हम अभिवादन करते हैं। सबको पता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के लिए विचार क्रांति आंदोलन की स्थापना की थी, जो आज़ादी के बाद का एक बहुत ही बड़ा आंदोलन रहा, जो हर व्यक्ति के जीवन में खुशी कैसे आए, हर व्यक्ति का जीवन कैसे महान बने, सबका शरीर स्वस्थ कैसे हो, सबका मन स्वच्छ कैसे हो और सभ्य समाज कैसे हो, इसके लिए उन्होंने ये विचार क्रांति अभियान, थॉट रिवोल्यूशन मूवमेंट की स्थापना की थी। और इसी के अंतर्गत जब से कोविड आया है 2020 से, तब से ज्ञान सभा के माध्यम से जो भी थॉट लीडर्स है हर फील्ड में, चाहे वो विज्ञान हो, मेडिसिन हो, साइंस हो, एनवायरमेंट हो, समाज हो, हर फील्ड से यहाँ एक्सपर्ट आते हैं और अपने ज्ञान के द्वारा जन जागृति का एक अभूतपूर्व काम यहाँ से हो रहा है। वैसे ही इसी क्रम में आज ये 90th एपिसोड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम सबको पता है कि अगर हम कंपेयर करें अपने आप को, तो हमारे जो राजा महाराजा थे बहुत सालों पहले, उनके जीवन से हमारे पास कई तरह की सुविधाएं हैं, कई तरह के साधन है, हमने सब कुछ पाया है, लेकिन सब कुछ खो गया है। और वो जो खो गया है वो शायद हमारी प्रसन्नता, हमारी हैप्पीनेस, आज सब कुछ होते हुए भी हम लोग आज प्रसन्न नहीं है। इसलिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही मूल्यवान टॉपिक है और इसके लिए डॉक्टर सुधीर शाह जी है अहमदाबाद से, उन्होंने हमें आज इनवाइट किया है और हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि वो एक बहुत ही ग्लोबल पर्सनालिटी है और मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी है। अगर उनका जीवन देखोगे तो आप उनको एक टीचर भी है, वो राइटर भी है, ऑरेटर भी है, साइंटिस्ट भी है और फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। अगर उनकी बात करो, प्रोफेशंस की बात करो, तो एक वर्ल्ड रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट है। ही इज अ प्रोफेसर एंड एचओडी एट केएम स्कूल ऑफ पीजी मेडिकल रिसर्च। डायरेक्टर है न्यूरोसाइंसेस स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद। वो गुजरात के गवर्नर जैसे बड़े जगहों के कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट भी है और साथ साथ में जिस तरह से आज योगा का महत्व है, तो हमारी गवर्नमेंट में वो एडवाइजर ऑफ वर्ल्ड योगा फाउंडेशन भी रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है और पब्लिकेशन भी किए हैं, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में न्यूरोलॉजी के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेंगे। और उन्हें जो बुक लिखी है उसकी मोर देन 60,000 कॉपी जो बिकी, उसकी रॉयल्टी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिलैंथ्रोपी के काम के लिए उपयोग किया, जिससे मालूम पड़ता है कि समाज सेवा का कितना बड़ा गुण उनमें है। उन्होंने एफआरसीबी लंदन से किया है और न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में जो हाईएस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड मेंबरशिप है वो है फेलो ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, उनमें भी उनको 2022 में शामिल किया गया है। तो इस तरह की बहुत ही गणमान्य व्यक्ति है। इसके लिए उनको बहुत सारे अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं, जैसे भारत सरकार की ओर से बहुत ही विशेष अवार्ड है पद्मश्री, मेडिसिन के फील्ड में डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड, यूएनओ अवार्ड, ग्लोबल विजनरी अवार्ड, एक्सलेंस इन मेडिसिन आईएमए गुजरात की ओर से, इस तरह के बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। वो बहुत ही जाने पहचाने व्यक्ति है, इसलिए आप देखोगे तो उनके इंटरव्यूज आपको बीबीसी चैनल में, डिस्कवरी में, सीएनबीसी में आप उनको जरूर पाओगे। साथ साथ ही उन्होंने एक आर्टिस्ट की तरीके से देखा जाए तो प्रोलॉन्ग फास्टिंग टॉपिक के ऊपर उन्होंने जो काम किया, इसके लिए इंटरनेशनल 3 डॉक्यूमेंट्री मूवी में भी उनको स्थान मिला है।
तो इस तरह के एक बहुआयामी व्यक्तित्व आज हमारे साथ है और मैं बहुत ही ग्रेटफुल के साथ में इन्वाइट करना चाहूँगा कि सर आप आइए और हम जो आज युवा साथी है सबको मार्गदर्शन करिए कि आज का जो समय है जिसमें प्रसन्नता एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सब कुछ होते भी खो गई है, तो उसको कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में सबको गाइड करिए। धन्यवाद सर। Thank you. Sharing. Hello, Hiteshi. Yes, sir, it is yeah, it is visible, sir. Perfect. All right. First of all, I must thank you all for this wonderful opportunity. दिया का मैं बहुत आभारी हूँ, विशेष तौर पे हितेश भाई और उनके साथियों का, जैसे इतने बड़े मंच पे और खास करके युवाओं से मुझे डायलॉग करने का चांस मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। अभी जो आज बात करने जा रहा हूँ वे हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान आयाम है हैप्पीनेस, सुख। आर्ट साइंस की भी हम चर्चा करेंगे और मैं मानता हूँ कि 1 घंटे के अंदर मैं आप सबको इतना हैप्पी बना दूंगा कि आप जाके सभी और लोगों को हैप्पीनेस स्प्रेड कर पाओगे। सो लेट अस स्टार्ट जर्नी। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक छोटा सा बताना चाहूँगा। Sir, this is Dear Mumbai. Can you try to increase the volume a little bit, please, on your side? Are you able to see the slides or not? Yes, we are. And the sound is also good, better now. Thank you. Okay, fair enough. So let me start. Okay, so the video is in short about the fact that happiness is the precursor of success and not the other way around.
Okay, so could you see all those things properly? Yes, All sir. right. Yes, sir. So happiness is contagious, audacious, bold, and one happy person can make 1,000 people happier. Okay, so I have a question to start with. Do you want to be happy? How many of you want to become happy? Raise your hands. The answer is, if you want to be happy, then be. Who is preventing you? Actually, it's a mental block. If we want to become happy, we can surely become. We decide to become happy. Remember, we are in charge of our happiness. You are in charge of your happiness, nobody else. हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि इसकी वजह से मैं दुखी हुआ, मैं तो मजे में ही था, ये ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा हो नहीं. This is all non correct statements. You are in charge of your happiness. Take charge of yourself. Decide every morning that you are in a good mood. Happiness is a choice. Happiness is our conscious decision, our conscious choice, and it is free of cost. Very important. Every morning we can decide today how happier we will become. And remember another important fact, happiness is a journey, it is not a destination. There is no better time to be happy than right now. So be happy now. हम लोग किसी को पूछते हैं भाई तुम कभी सुखी हो, कब सुखी होने वाले हो, तो बोलेंगे कि भाई अभी तो ठीक है, एक जरा ऑडी गाड़ी आ जाए फिर मैं सुखी होगा. कोई बोलेगा कि यार 5 करोड़ रुपया मिल जाए फिर मैं सुखी होगा, चैन से सो जाऊं. कोई बोलेगा कि मैं फलाना प्रेसिडेंट हो जाऊं फिर मैं सुखी होगा. सो वी हैव thought of a goal and our happiness is cling to that goal. Until then we don't remain happy, and then once we reach that goal, surprisingly and constantly that goal moves, and then now we have some another goal, and then another, the chasing of the thing, the whole life is wasted in chasing goals, and therefore we don't become happy. Rather than that, the whole journey of life should be journey of happiness. ये मुझे पाना है, तब तक जाने की जो जर्नी है वो भी हैप्पीनेस है. वो जब हम मेंटली सेट करेंगे, हैप्पीनेस इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन. देयर इज नो बेटर टाइम टू बी हैप्पी देन राइट नाउ. देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस. हैप्पीनेस itself is the way. So do not chase happiness, just enjoy the journey. So that is my opening message. फ्रेंड्स, एवरीबडी वांट्स टू लिव, एवरीबडी वांट्स टू हैव. सबको हम पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तो एवरीबडी विल आंसर द सेम वे कि भाई क्या चाहिए, थोड़ा सुख और शांति, और क्या चाहिए हमें जीवन में. एवरीबडी नोज दैट. फिर भी एट द एंड ऑफ लाइफ, व्हेन आई क्वेश्चन 100 पीपल इन माय थीसिस, 98 people said, Dr. Shah, something happened wrong. We knew that we wanted to become happy. We wanted to make people also happier, but something we missed out. We forgot the way. We did not know how to negotiate happiness, and therefore our life is not happy life. So the ultimate purpose of life is to enjoy and live happily and make others happy. Let us be clear on that. Okay, so now you fasten your seat belts. We are now starting the journey of happiness, and from this moment onwards, everybody listening to this will start his own or her own journey of happiness. We will change the mindset. So how we will go about it? First, I'll define what is happiness, what is the psychology of happiness, neuroscience of happiness. So there is a science part. Then we'll try and dissect out why we are unhappy, what determines our happiness. Unless we know that, we cannot come to the main part, that is how to be happy, the physical, chemical, moral, philosophical, spiritual perspective of happiness. That's how we can. So that is the main part. But so as to understand that, we have to go through the first part. So let's move slightly faster on these first two aspects. What is happiness according to Aristotle? Aristotle 400 BC from now. He defined happiness is the meaning and purpose of life, the whole aim and the end of human existence. Beyond that, nothing. So all of us strive for happiness. हम जो भी जिंदगी में काम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हर एक प्रवृत्ति का मूल हैप्पीनेस है. क्योंकि
अपना अंतर का जो आत्म तत्व है पूरा सुख से अनंत आनंद से निजानंद से भरा हुआ है, और कस्तूरी मृग की तरह हम सुख को बाहर ढूंढते फिरते हैं और बाधा पछाड़ते रहते हैं। एक्चुअली हैप्पीनेस इनसाइड है, और इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, द होल एम एंड एंड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अनलेस वी अंडरस्टैंड that happiness is inbuilt, and then we strive to see inside ourselves and understand. And that is the purpose of this presentation. But we'll take a quick journey to all aspects. Our philosophical definition of India is achieving what is sought for and dissociating from what is not desired. Ishtafal ki prapti or anishtafal ka viyog, that is happiness. Happiness is a state of mind. Make it a permanent habit. Now, before we understand happiness, I had another research work. I wrote to 150 people, what do you mean by happiness? So what is your definition of happiness? Or how you would feel happy? So people answered in a vague way, but when I classified that, I understood that there are three different types of people. Spiritually awake, that is sattvic people, those who are asleep, tamasic people, and those who are somewhere in the middle, rajasic people. 90% of the people were in the tamasic group, 5 to 8% in rajasic group, and 2% in sattvic group in my study. Now, what is that? So, depending on the level above, sattvic, rajasic, tamasic, your personal definition of happiness will change. There are three groups: pleasure, joy, and bliss. Pleasure is for tamasic, Indriyajanya Sukh, Rajasic are for achievement, success, and awards, and bliss is Param Shanti, Ishwar Prapti ka goal. So let us see what is Tamasic Sukh, that is pleasure. So same Sukh defined by Tamasic people, this is animal instinct. For those who want to seek happiness from outer world, it is characterized by pleasure. It is based on five senses: आँख से अच्छा देखना, कान से सुनना, स्पर्श, जीभ और अच्छी नाक से ऐसी स्मेल आनी, वो सेंशुअल है. इट इज इंस्टिंक्चुअल, एक क्षणिक है, फिजियोलॉजिकल है, and it is always perpetual, and there is a demand for more and more. In the sense, these people are not satisfied. This sukh, आज आपने अच्छा कुछ खाया और कल आपको नहीं मिला, तो there will be craving. So that is a demand for more and more. That leads to inevitable pain. That is animal instinct. So what are the objects of pleasure? Sukh, जिसको हम मौज मजा कहते हैं, वो food, seeing places, listening music, fragrance, sexual pleasure. These are all elements of pleasure. But really, happiness, does it reside here? No. When we did MRI, fMRI of the functional MRI of the people with the when they were enjoying the physical pleasures, the brain displayed different signals depending on which part of the cortex was in provocated, like from the visual cortex. When you are seeing something beautiful, the posterior part of the brain. When you are hearing something, the auditory cortex. So different parts of the brain were activated during different sensual input, and that was in a very larger rough area. And the principal elements were dopamine and serotonin merged with noradrenaline. So these are the neurotransmitters, and these are the brain areas. So that much enough for you at this moment. Then we studied the second group, who said that their happiness resides in achievements and success. The previous one, the happiness depended only on the external world. Here there was some internal inputs, santosh, and there was some external input. So they begin to feel happy for no particular reason. This is more psychological. The previous one was physiological. There are desires here also, like dopamine and serotonin are pleasure principles. Here also they are there, but here the refined desires occur, service to mankind, success, creativity, achievement, social interaction, recognition, awards, and some simple practices, group practice like prayer, chanting, etc.
like achievement, degree, success. Now, creating music, singing yourself is a element of joy, but when you are listening to good music, it is pleasure. So, see, this is the difference. Hiking, sports engagement, and when we did fMRI of these people, we had different set of the brain area which are activated, and these are in the posterior parietal and uh, perisyngnual cortex, etc., etc. The principles of joy, neurotransmitters, where apart from dopamine and serotonin, they are the desire element, they are the principles of reward, so they are there. But here there is oxytocin and vasopressin, the bonding element, social recognition, calm, ego element, and prolactin. These were the additional chemicals involved in the joy kind of happiness. Now, this lasts much longer than the pleasure. Pleasure is very momentary, instinctual, and just for few seconds when we are enjoying. While joy lasts much longer, like you have achieved, you have been awarded, or you have some created some commune or institution, you will feel satisfaction for much longer time, and that is principle of joy. But there are 1 or 2% of people still who are really in a higher state where they require long, peaceful activities, and they create peace, they create bliss to themselves and others. This is the highest state of happiness. Here, the activities of mind become suppressed. We'll see what is activities of mind, like desire, ego, attitude, and mind wandering between past and future. Our consciousness in bliss becomes identified with universal consciousness, as Sri Ram Sharma used to describe in his wonderful books, which are full of science. Even today's scientists have agreed to what he wrote in his transcendence state of mind, what he could perceive is all truth. Without scientific experiments, he wrote down whatever is today turning out to be truth. Experience of just being, it's a meditative kind of state. There is no external input, it is a purely self-dependent state, and it's a fully awake state. Sattva is a fully awake state, tamas is the fully sleepy state. So sleep is in terms of mental awareness, awakeness. Mindfulness practice, for example, observing the body and mind, intentionally letting experiences unfold from moment to moment and accepting as they are. This is kind of a blissful activity. Observing thoughts without getting caught up in them, like eating meditation. This kind of people, whatever activity they are doing, they are in meditative state. When they eat, they are meditating. When they are sitting, they are meditating. While talking, they are meditating. They are in always constant touch with the supreme or divine. And that is the highest meditative state. And when we could do the catch hold of these people and do fMRI of people who are in meditative practices, during their meditative act, there is only a pinpoint area in the posterior parietal lobule where there is an increased cerebral metabolism, and in fact we found increased CBF in that particular area. So this is a blissful thing. There are a lot of things are cut off, and only you remain as it is. You are in touch with the supreme, and there is no other activity of mind. Here the chemicals are entirely different. The set here is endorphin, GABA, that is gamma aminobutyric acid, endocannabinoids, and all those. These are all neurological, neuroscience related activities. I would not wish at this moment to uh, discuss much about it, but for your information, these are the elements of peace and bliss, and you can actually do aerobic activity, brisk walking, swimming, massaging, etc. These things gives you a hint of kind of relaxation state. But the actual bliss is entirely different. The components like endocannabinoids, endorphin, encephalins, and GABA, they are in a proper proportion so that you feel completely, peaceful and blissful. And that is sattva. When
When you are in a complete blissful state, inner peace is automatically given as a package deal. And what is inner peace? Inner peace refers to a state of being mentally and spiritually at peace, with enough knowledge and understanding to keep oneself strong in the face of discord and stress. So, friends, these are three different levels of happiness. So, whenever somebody says कि हूँ या सुख में हूँ या मुझे सुख चाहिए या कभी सुख की बात हो, तो ध्यान से आप ये डिसाइड करो कि आर यू टॉकिंग ऑफ प्लेजर, वर्ल्डली थिंग्स और elements of your five senses, or you are talking something related to community and achievement, success, or contribution to society, or leadership kind of things, or bonding, or bliss that is absolutely at peace with yourself, being part of something bigger than yourself, that is universal consciousness. You are in tune with supreme consciousness, God, divinity, or uh, the the highest soul. The next question that comes, friends, is can you really measure your happiness? Now, well, friends, this presentation I had given to several places in US, UK, and so many other countries. So people had kept on asking questions. So some of the slides I had to keep on editing and adding, and this is one of them. Somebody asked me, "Can you really measure happiness?" Yes, we can do happiness measurement. As you know, from the financial point of view, there are something called happiness index, GDP, human development index, etc. But these are all for the financial and growth of the country. While for your own happiness status, there are some psychological measures. We call it personal psychology index scale. You can Google that and you can fill up. There are certain figures and facts that you have to fill, and from that you can find out whether on what level of happiness you are you better than yesterday, better than last year, or tomorrow you will be better than today. All this measurement you can do, self assessment score they call it. But hardcore neurologists, we do something called as electroencephalogram, magnetoencephalogram, fMRI, and positron emission tomography. These are the different complex machines. And SPECT, where we study the blood flow during happiness, and we study which part of the brain is involved. So, friend, as for example, happiness does not lie in a particular area of the brain. As I mentioned, pleasure has a different representation in the brains. Joy is lying in different area of the brain, while bliss is in the posterior parietal lobule, etc. So laughter responses are generated in the prefrontal cortex here, and so on. Pleasant film chips in the left frontal. So I think, friends, we have almost finished part one. Now we go to the part two. Why we are unhappy? What determines our happiness or unhappiness? So, friends, I must convey one very important lesson that I have learned from my own life. Life is larger than medicine or professional business. Till 1995, in my first 5 years of practice, I was doing wonderfully well in my practice, but I had become quite stressful and I was getting irritated and whatnot. But then I met my Guruji and I asked him, "What is this? Why my profession is not bringing me happiness and generating happiness? Instead, I am becoming more aggressive." So he told that, "Sudhir, don't forget that you are not only a doctor, neurologist, you are a father, you are a son, you are a husband, you are a friend, you are a teacher, you have so many roles to play. So don't wear the robe of medicine all throughout your life. Play your different role, justify them." I think that was a very important lesson. Secondly, he said that learn meditation. Third, he said learn music, be noble. And he gave me the list of great spiritual books which all changed my life. Friends, why we are not happy? If I talk of doctors or professional people, we have academic stress, we have professional career related stress,
We have corporate stress, conferences, researches, looking after spouse, in-laws, parents. Society has lot of obligation. We have lots of obligation. Psychological issues, social problems, issues of children, teaching, interpersonal relation related issues, competition, negative emotion which we have to get rid of. Then everybody wants to become famous, everybody wants to get money, time management, traffic issues, mobile. Nowadays, for last 10 years, social media have literally taken charge of us. Staff management, misunderstandings, legal issues, paperwork, demanding patients, caregiver stress, and the top of it, government issue, IT, GST, demonetization, what not. So, at the top of it, like Arjuna, we have to do Lakshya, we have to keep our physical, mental health okay, we have to remain fit and beautiful or handsome. So friends, there is no end to all that. What we have to realize in the journey of life, we always come across crossroads at several times. And that time we have to decide whether at the age of 40, 45, 50, we have achieved something in life. Now, do you want more money, more fame, more achievements, possessions, awards, and creating buildings and communes, or you want to travel the less traveled road of religion, morality, philosophy, spirituality. That is a road to bliss and peace. What do you want? And sooner you decide towards the right side, it is better for your mental, physical, spiritual growth. One has to choose between success and inner happiness. Success is different, inner happiness is different, friends. I must tell you that I chased for success in my initial years, but the moment I realized what is inner happiness, success actually followed me. I did not ask for so many things in my life, but God is so kind, karma is so great that my happiness is the leader, and even if I don't desire, so many things follow. So success is taking from the system of life, and happiness comes when you start giving to the system. So go back and give to the society, to your people, to your nation. Serve your nation, and don't look for what smartly you can get from the society or nation, but be kind and see what you can do for people. And this virtual world, try to reduce your virtual exposure to different mobiles and medias and this and that and TV. This takes away your real happiness, friends, and they make you sick. Instead, use 45 minutes. You divert your 45 minutes or 30 minutes at least to meditation or music or something, meeting physically to your friends. How many hours we spend after virtual world? Some people say 3 hours, 4 hours, 6 hours. Mad. Instead, use some time for your health, physical health. Do some exercise, do yoga, learn music, do meditation, read good books. That is what will bring you happiness. Now, the vital question: what determines our happiness? Friends, you'll be surprised. The medical study shows that 20% of the times the happiness is your genetic inbuilt. Look at the Parsis and Brahmakshatri and some other communities. They are genetically happy. They always are cheerful and they do thatta masti or I mean they are always lively, jovial people. And how your family is, that also is very important. Your family has an environment of happiness and some values, they will be, so that is your genetic input. 10% is circumstances. Circumstances have their impact on your life during that phase of life, but circumstances don't last forever. So the only 10% is given to circumstances. 20% comes from the money, health, etc. And you'll be surprised. Science says that 50% of your happiness is determined by your attitude, behavior, morality, and spirituality. And that is what we have to learn. So let's see what is genetics. Some cause happiness wherever they go, others whenever they go.
Some people, when we meet, we feel how charged we are, and some people we see, my God, let this bala go. So that is what is genetic. Some people are born happy, some are difficult, and that is because of the genetic make. And there are certain genes like VMAT2, PI-TLPR, MAO-A, FA, and DRD2, DRD4, VMAT2, TIA, and others. So these are the genes which are not given by your parents by chance. If it is the default lacking in your, there is a way of epigenetics. If you have got it, you are lucky, fine. If you have not got, then change your lifestyle, attitude, behavior, be mindfulness. Humans have genes that can be activated by our own thoughts, emotional patterns, and behaviors. Listening to talks like this, meeting saints, discussing on such vibrant subjects, or participating in group discussions and doing mindfulness, meditation, altruistic actions to help people, help somebody cross the road, give people food or shelter, whatever little small acts you can do. This will unlock the DNA code and produce natural happiness. So, despite the fact you may not have these genes, you can actually unlock the DNA code or change your gene expression. If you can't change the genes, expression can be changed, and the same thing with the same genes, you can remain uh, happier. With mindfulness, meditation, altruistic action, your DNA is changed. Thoughts and emotions and behavioral situation, your gene expression can change, and that is what Bruce has written his book. You should read those wonderful books, epigenetics. Okay. Then we come to circumstances. We should reduce our commitment, reduce our interaction with people. We sometimes unnecessarily try to meet a lot of people and try to create groups virtually and physically. I mean, restrict your commitments to people, interaction with persons. The more the commitment, the more the interaction with people, believe me, you will become unhappier, because their sorrows, their likings, their dislikings, their expectation will increase. And Sanjogo Mula Jivena Patta Dukkha Parampara. Lord Mahavir said once, the more you have contacts with persons and situations and people, the more you will be unhappy. There will be cascade of problems. There was one more study I would like to quote, that who are more happy according to the GDP as well as financial income. Those countries shown in green, like North America, Canada, Greenland, New Zealand, etc., they were supposed to be happy. India was somewhere in the middle, and some countries of Africa, etc., are unhappy countries. But this was purely based on money. So that brings to the next question: does money produce happiness? Yes, money produces short-term benefits. It produces some kind of help, but more money will not bring happiness. Why? This study shows that with more increase, upper graph shows the real income per head. With increase in the real income per head, the actual happiness did not increase beyond a certain point. So that certain point is different for everybody. कोई लोगों के लिए जीवन में 5 लाख 15 लाख 2 करोड़ बस हो जाता है, बाद में संतोष आ जाना चाहिए, but there is no end to greed. Some people, despite 2 lakh crore, 10 lakh crore, they want more. Some countries, they want expansion of their areas, and all this is all cause of global unhappiness. Restrict your own requirements, restrict your income, and if you get extra, give it, spread it up, help people. Money can bring security as well as comfort and pleasure. It can bring improved standard of living and education. But more money corrupts success, corrupts. They can take away morality, relationship, health, bliss, and peace. So what do we remember? Applause dies away, trophies gather rust, and winners are soon forgotten. But what you remember is those people who take care of you and appreciate you. We are not concerned with why or how somebody got 1 lakh crore or who got Nobel Prize. We don't remember the names even of last year's Nobel Prize laureates. But
We remember people who have helped us in our bad times. So is with you. You help people, people will remember you. Remember this slide again. Choose your destination, turn to the right side at the crossroad. Change from sympathetic running around to parasympathetic yogic mode. Yogic mode is slow, peaceful, and calm. So, friends, we come to the most important vital part. From all these understanding, what we see quickly, how to be happy, what are the ways how one can become. So, we'll see one by one physical, social, moral, mental keys of happiness, and then we'll touch on religious and spiritual. This lecture, friends, require minimum 2 hours, maybe 3 hours, but as Hitesh Bhai and the team said that we want to discuss, so I have compressed it. I am going a little fast, but I'm sure you are all intelligent. You will understand the gist of it. So the first and foremost is physical happiness, and I don't have to tell more about the physical health, how you can remain healthy, physically fit with eating right, doing exercise, yoga, breathing technique, proper sleep, and learning to relax, etc. How to eat right, you know well, otherwise you can read it up. Get enough sleep, proper rest is important, proper exercise, walking is important, running or gym or swimming. Say no to excitatory things, coffee, alcohol, etc. Do straight resistance training. Went out to a friend, talk to your friend, do yoga, massage, laugh frequently. Laugh frequently at yourself, not others. Don't laugh at people's mistakes. Laugh at your own mistakes very elegantly. My grandfather used to tell me, Sudhir, live elegantly, love abundantly, and laugh exhaustively. Laugh from the core of your spirit and not in artificial way. Learn to laugh out in your own mistakes, not at others. Smiling is also very important. Just smile. Smile solves a lot of problems. When you are not clear, also you can smile. When you are greeting somebody, you can smile. When you are wishing somebody, you can smile. And silence, with all due regards to them, and silence avoids so many problems. So if you don't understand, skip now. And love abundantly. This is a very profound statement. If you spend your life in judging people, then when will you love them? Life is too short, my friends. How can we spend our time in criticizing and judging people? Instead of that, love people, help them, forgive them, hug them, and help them. And when you do compassionate activity or loveful activity, there is a reward in the brain. It is called rostral midbrain area, which is activated during this compassion or love, and that produces parasympathetic output. Again, parasympathetic is yogic mode, slow, peaceful. Your pulse becomes slow, respiration slow, blood pressure reduces, you are calm, serene. That increases your immunity, increases your vitality, and your force to survive, and you live longer. There are medical ways also. If happiness has a biological cause in the brain, when will be able to influence with drugs, surgery, bionics. So sometimes we refer to psychiatrists for counseling for drugs like anti-anxiety, antidepressant drug, and you'll be surprised. 80% of the disease are psychosomatic. The moment your happiness improves with whatever way, physical fitness, mental fitness, or spiritual way, happiness will improve your disease like arthritis, allergies, asthma, hypertension, coronary artery disease, irritable bowel syndrome, heartburn, constipation, migraine, tension headache, premenstrual pain, menopausal discomfort, back pain, hip pain, depression, anxiety, alcohol abuse, skin disorders, psoriasis, chronic fatigue, obesity, sleep problems, and number of problems are related to your mental state. Once you become happy, many of these problems are reduced or they disappear. And in future, I tell you, we doctors, particularly neuroscientists, are working on deep brain stimulation techniques of the brain where we will stimulate brain and will make you happier. This is functional neuroscience. I don't know whether
when this will be a dream come true kind of situation. But there are genetic ways we will be able to change your genes with genetic engineering. We have chemicals which we can spray in your nose and we make you happier. So tomorrow the world will be different with lot of medical intervention regarding happiness. But these are all non-natural ways. We have to go by natures. And in gene editing method, suppose you come to my clinic, I will test your gene. If you are lacking or deficient in certain genes, I will use robot nanotechnology, etc., and give something intravenously, or maybe put you in your bone marrow something, and your genes would be changed. So this is how we will be able to alter or manipulate happiness. Well, this was something about the. Next, we go to the social part, relationship. Friends, relationship play a great role in your happiness. 5 relations are very important: married life, children, in-laws, friends, and profession. So, married life, happy marriage, it's a way through which two people join together. What is marriage? Marriage is a way through which two people join together to solve the problems they never had before. Some people say happy married life is oxymoron. They don't go together. Happy marriage cannot occur. But I mean, it's a joke. There are intelligent, smart people. They know how to deal with women, or women know how to deal with men. All what women need is they want to be understood, loved, cared for, validated, accepted, and they want freedom. And in return, what do men want? They want leave me alone. Joke apart, but this is how beauty of married life is. Happiness for children is not by giving them money or bringing them all they want, but give your precious time, educate, give culture, attitude, and art, and avoid friction with your in-laws, love your parents, give their time to both. And friend is a noble gift from Almighty. A person doesn't need a large number of friends to be happy. Only one single friend is enough. So I'm lucky to have wonderful friends in my life. Then we come to the next is the social activities, pleasantful activities: music, dance, traveling, reading, gardening, grooming. I myself am fond of music, as Hitesh was telling. I love music. I learned music. After this program, immediately after that, I have to go to a dance concert as a guest of honor. I also love traveling. I'm sure all of you must be doing, but do it with a lot of involvement: reading, gardening, grooming, and books are the best friend. A library is a hospital for the mind, they say. We need to know that we are not alone. And music is the medicine of the mind. Music is a string that vivifies your soul and fills it emptiness. Traveling is also a great stress buster. And painting, grooming, photography, or have a pet. Okay? And then those who are interested in joy, they should build up teams, leadership areas, wisdom, knowledge, temperance, love, justice, etc. And forget not one thing: time management is very important. If you respect time, time will respect you. And do only those things that you only can do, or delegate to others. I may be knowing driving, but if I have a driver for me, I would rather ask him to drive, and I would scribble down my thoughts and do creative things while journeying forward and backward. And that, my treasure, would make me immortal. Like that. And decide on whom to meet, why to meet, where to meet, and for how long to meet. Don't allow XYZ people to enter in your life and waste your time. So then we go to the next 5 virtues: gratitude, appreciation, forgiveness, kindness, and acceptance. Friends, if I have to give 2 important tips today, what can make your life full of abundance? 2 virtues: gratitude and forgiveness, appreciation and compassion. Feeling of gratitude release
positive endorphins throughout the body, creating health. That creates magic. Thank people from heartfully thank. Even the doorkeeper who opens the door, for the person who brings a glass of water, thank them and appreciate people for their smallest wonderful virtue. Everybody has some or other virtue. So be verbal in acknowledging your appreciation. If you do at least two things, you will become abundant in your life. And I must tell my gurus, my teachers told me this in life from my beginning, and this has helped me. Forgiveness is also important. The first to forgive is the bravest, and the first to forgive is the strongest, and the first to forget is the happiest. Apologize and forgive. गालिब हमने जिंदगी को यूं ही आसान कर दिया. गालिब हमने जिंदगी को यूं ही आसान कर दिया. बहुतों को माफ कर दिया, बाकी से माफी मांग ली. जैनों के अंदर तो मिच्छामि दुक्कडम क्षमा का पर्व भी होता है. सेम वे कंपैशन, accept the things which you cannot change, and also change the things which you can, and know the wisdom to know the difference. So accept certain things. So these are the 5 virtues. Then we come to the mental level, and then last the spiritual. Happiness is not something that happens that money or power can command. It is only by controlling our inner experience that we can become happy. Happiness cannot be reached by consciously searching for it. Okay, so happiness is a state of mind, and it is not something which you can buy outside. Though I go to market and buy happiness, it is controlling your inner experience. In the classical material world, if I want something, I have to, suppose I want to buy a TV or a computer or a mobile, I have to give money, and in exchange I buy certain thing, etc. In the spiritual world, there is no exchange. If I want happiness, I have to give happiness. If I want peace, I have to give peace. If I given somebody envy or hatred, then I will in return only get envy or hatred. I cannot expect happiness. Second rule is, if I given 1 unit of happiness to somebody, I might get 100 unit in return. And third important rule is, it is not necessary that I'll get from the same person. I can get from another X person. There is a circle of life. So if I am giving happiness or peace to somebody or respect to somebody, I can get respect or happiness from a different source. And as we don't understand this, then we expect from the people that, oh, I've done a lot of things for you, and why you teach me this? That no, the circle of life is different. You have to understand these rules of happiness from the spiritual concept. Friends, all we have talked is the physical and mental and other levels, but the fact is that the mental level is the most important level. Happiness does not reside outside in getting achievements and awards and possessions and creating communes and institutions. You don't get real happiness. It will not last long, because the moment the power or the money goes away, people will laugh at you. The real happiness is in the mental inner world, which nobody can take from you. So why the spiritualist people say, and the philosophers tell us, that it is not that happiness you have to get from outside. You have to look inside. You are inbuilt, as I mentioned in the beginning. Your core is full of happiness. But because of the mental activities of wrongdoing, avidya, you are unhappy. And what are those activities? Our own desires, aspirations, our thoughts, our emotions, our vikruti, kam, krodh, lobh, moh, krodhman, maya, lobh, rag, dvesh, the mind wandering between past and future, the duality, our ego, our attitude. These are the reasons why you are unhappy. Otherwise, the Atma, the soul, is full of happiness. Anant vidya, anant sukh, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र का जो पूरा सोर्स है अपना आत्मा है, उसके ऊपर मन की ये एक्टिविटी है, इच्छा, विचार, वृत्ति, राग, द्वेष और ड्युअलिटी, अपना अहंकार, अपना वलन और अविद्या जो इससे बनती है, मोह, वो सारी चीजें दुख का कारण है. उसको रिमूव करो,
तो अंदर से हैप्पीनेस प्रकट होगी। और उसके लिए सभी को ये सब चीज़ें करनी है। वी हैव टू कंट्रोल आवर अटैचमेंट, वी हैव टू modify our thoughts, reduce desires, reduce emotion, that your ego. We are human beings, so I don't want to convey that you don't enjoy pleasure. You must eat good food. Sometimes you enjoy things, but you should not be attached, or you should not cling to all these things. You should know that the real happiness is beyond pleasure and joy. It is real bliss that will bring you. So happiness, attachment, you have to reduce to people and objects. You only lose what you cling to, Buddha Lord said. And thoughts, what are thoughts? We are what we think. हम खुद क्या है, अपने अपने विचारों की एक प्रक्रिया है. All what we are arises from with our thoughts. With our thoughts we make our world. Speak or act with an impure mind and trouble will follow you, as the wheel follows the ox that draws the cart. अपना सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमी जो नुकसान नहीं कर सकता, उतना खतरनाक नुकसान अपना खुद का थॉट्स कर सकता है. And when we studied thought in SPAC machine, we realized that thoughts are not atomic. They are represented in brain. Your compassion, your non-violence is represented here. Your anger is represented somewhere here. Your laughter is represented somewhere here. Your ego is represented somewhere here. Your jealousy is somewhere here. So all thoughts and desires, etc., are now inside brain. We can map it, and therefore they are not abstract things. Same way, desires, Buddhism, Jainism says that there is no fire like desire, there is no weakness like anger. और इच्छाओं रही जाए यानी श्वास छूट जाए यानी मृत्यु के आए. इच्छाएं जब बच जाती और श्वास खत्म हो जाती है उसको मृत्यु कहते हैं. लेकिन जब इच्छा खत्म हो जाती है और फिर भी हमारे पास जीना बैलेंस में रहता है, सांस बैलेंस में रहता है, उसको मोक्ष कहते हैं. सो वी रिड्यूस आवर डिजायर्स, विन एंगर बाय फॉरगिवनेस, कॉन्कर ईगो बाय पोलाइटनेस. नम्रता से ईगो को जीतो, क्षमा से गुस्सा कंट्रोल करो, माया को सरलता से जीतो, और ग्रीड मतलब लोभ को दान, दया और ग्रेसफुलनेस से जीतो. और एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस. सो मन की जो ये प्रवृत्तियां हमने बताई, थॉट, ईगो, डिजायर, एम्बिशन और ईगो एटीट्यूड, वो सारी चीजें अपने दुख का कारण है. उसको रिमूव करो तो सुख प्रकट होगा, और वो सुख सही ब्लीस वाला सुख है. Stop comparing, stop expecting, stop criticizing, start sharing, start helping, start loving, give, forgive, count blessing. And so friends, this we come to the last 5 minutes of talk, maybe 5-7 minutes. Religion opens doors of happiness. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जो 5 व्रत है, जो हमारे रिलीजन के आधार स्तंभ है, वो हमें सुख की ओर ले जाते हैं. वो हमारा राजमार्ग है. Or ethics is also equally important. And then we have to understand the philosophy of life. What is the karma, law of attraction, law of impermanence? Nothing is permanent. हर एक चीज अशाश्वत है, क्षणिक है, चेंजेबल है. डेस्टिनी का रूल समझना चाहिए, और दूसरा ये समझना चाहिए कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स. यू हैव टू डेवलप एन आई टू सी. तो हमने स्पिरिचुअल कमिटमेंट वाले लोगों का स्टडी किया, तो हमने देखा कि जिसका स्पिरिचुअल कमिटमेंट ज़्यादा था, जो ग्रीन में दिखा है, वो लोगों दूसरों से बहुत ज़्यादा सुखी रहते थे. तो व्हाट आर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अस? वन इज स्वाध्याय, दैट इज स्पिरिचुअल रीडिंग. चाहे आप गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, प्रस्थानत्रयी पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, जैनिज्म पढ़ो, बुद्धिज्म पढ़ो, जो भी उपनिषद पढ़ो, जो भी अच्छी बाइबल है, कुरान है, जो भी आपकी बुक है उसको ध्यान से पढ़ो. उसके अंदर के जो तत्व है उसको समझो. न समझ में आए तो गुरु से जाके पूछा करो, उनसे पाठ लो, सत्संग करो, चर्चा करो, चैंटिंग करो, भक्ति करो, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग योग की बात करो. फिर थोड़ा बहुत तप करो, बाह्य और अभ्यंतर 2 टाइप के तप जैनिज्म में बताए गए, और मेडिटेशन करो. सो स्पिरिचुअल रीडिंग एवरी डे, हाफ एन आवर स्पिरिचुअल रीडिंग शुड बी योर डेली routine.
instead divert half an hour from your mobile etc. to reading, to your exercise, to meditation. So total 2 hours you will spend for yourself, and you see how happier you become. So read, do chanting, satsang, do prayer, soulful prayer करने भगवान से सौदाबाजी नहीं करने के, सर्वजन सुखी होने के लिए, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. That is what you have to pray for. And when you do prayer, there is a reward in the brain. This is the limbic system, and during deep prayer, the increased cerebral blood flow in SPECT study we saw, and that produces parasympathetic flow. The yoga is one of the best ways. Ratnatraya Moksha Marg, या ज्ञान योग, enlightening ज्ञान योग, कुशल कर्म योग, pious भक्ति योग, राज योग, या तो फिर तप करो साथ में बाह्य अभ्यंतर, उसमें प्रायश्चित है, विनय है, व्यावच्य है, साधु जनों की सेवा है, स्वाध्याय है, कायोत्सर्ग और मेडिटेशन. ये सारे जो है वो मेडिटेशन क्या है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है कि प्लीज डू मी अ लिटिल फेवर, सर्च योर ओन सेल्फ विद इन योर सेल्फ, दैट इज मेडिटेशन. रूमी जो सूफी पोएट था तुर्की का, उसने एक ही वाक्य लिखा है, प्लीज डू मी अ लिटिल फेवर, तेरे ही अंदर तू तेरी तपास कर, इतना तू मेरी फेवर कर भाई, वो मेडिटेशन है. जब हम अंदर देखना शुरू करते हैं तो हमारी वृत्ति सब हम देखने लगते हैं. हेलो हेलो हेलो, am I audible? हेलो, We can hear you, sir. और मेडिटेशन में हम क्या देखते हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मेडिटेशन मात्र इंडिया में हो रहा है. चाइना, इस्लामिक मेडिटेशन, जूइश मेडिटेशन, से विश्व में मेडिटेशन अलग अलग जगह पे डेवलप हो. हालांकि इंडियन सिस्टम्स में जितना डिटेल है उतना शायद ही कहीं होगा. फिर भी मेडिटेशन इज समथिंग विच ऑल ऑफ अस, it's what is meditation? It is exercise of it is exercise of mind to keep it healthy and clean as we do for body. It's a state of altered consciousness. 4 स्टेज ऑफ कॉन्शियस कहते हैं, जिसे निद्रा, सुषुप्ति और स्वप्न के साथ जो जागृति वाली अवस्था है, 3 अवस्था हम जानते हैं. दिस इज द 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. It's a spiritual ecstasy with neurological manifestation. It's not hallucination. 1995 के पहले प्रयोगों में ऐसा मानते थे कि मेडिटेशन एक कोई भ्रमणा है और हेलुसिनेशन है, पर इसके बाद जो प्रयोग हुए उसके अंदर पता चल गया मेडिटेशन इज नॉट हेलुसिनेशन, it is a spiritual ecstasy which can be mapped and recorded. I don't have time to go into the details of different meditative techniques. Maybe some other time when we meet, to breathing meditation, object meditation, sound meditation, thought meditation, etc. I'm sure शर्मा जी के जो अपनी बुक है उस मेडिटेशन के काफी चीजें बताई हैं. ये सूफी मेडिटेशन है. आप लोग तुर्की गए हो तो ये सूफी मेडिटेशन वो भी देखने लायक है. मेडिटेशन के बहुत प्रकार है. पातंजल ध्यान, आनापान सति, स्मृति उपस्थान, विपश्यना, प्रेक्षा ध्यान, जैन ध्यान, ये सारे ध्यान के ऊपर मैंने काफी सोच लगाई. कुछ ध्यान मैंने खुद जाके सीखे, करे, उस पर रिसर्च की. उससे मैं आपको मित्रों एक चीज जरूर कहूँगा, जीवन में एक चीज आप जरूर करना, ध्यान सीखो. रोज आधा घंटा ध्यान करो भाई साहब. मुझे अगर आपको एक ही सीख देनी है और एक ही भेंट देनी है तो वही है कि आप मेडिटेशन करो. चाहे ज्ञान हो या विज्ञान हो, अध्यात्म हो या रिलीजन हो, सभी लोग एक ही बात करते हैं कि खुद के अंदर जाओ, खुद की तपास करो, ध्यान में मग्न हो. जो भी मेथड से आप करना चाहो, उससे फायदा ये होता है कि आपका प्रीफ्रंटल जो लोब है उसमें ब्लड फ्लो बहुत बढ़ता है, आपकी प्रज्ञा का विकास होता है. वो हमने साइंस से प्रूव किया है. हमारे जो काउंटर पार्ट मित्र हैं प्रोफेसर एंड्रयू न्यूबर्ग, उसके स्पेक्ट के प्रयोग के बाद ये पता चल गया
कि मेडिटेशन इज नॉट हेलुसिनेशन, इट्स अ रिकॉर्डेबल इवेंट इन द ब्रेन। इससे प्रज्ञा का विकास होता है। जो आदमी सालों के साल करता है वो बहुत ही प्रज्ञाशील हो जाता है, और उसका बिफोर मेडिटेशन देखो और ड्यूरिंग मेडिटेशन 30% रेट जो पार्ट है ब्लड फ्लो बढ़ता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि उसका पेराइटल एरिया, जो ये एरिया है, यहाँ ब्लड फ्लो बढ़ता है तो प्रज्ञावान होते हैं। यहाँ कम हो जाता है तो उससे आपकी मन की जो व्यापार है, ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस पर्सन, जिससे आपकी ईगो, एटीट्यूड, इमोशन, थॉट्स और डिज़ायर्स बढ़ती है, वो सारी कम हो जाती है। तो मित्रों, मेडिटेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ पैरासिम्पैथेटिक फ्लो भी बढ़ता है तो मन शांत होता है, मन में से अमन हो जाते हैं, ये विकार सारे खत्म हो जाते हैं। जैसे वहाँ ब्लड फ्लो कम हो गया तो सारे विकार विचार कम हो जाते हैं, और जो हमारे दुख का कारण है, यही चीज़ें हैं, उससे हम मुक्ति कर सकते हैं अगर रेगुलर मेडिटेशन करते। तो हमारी एटीट्यूड बदल जाती है, पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, और the longer I live, the more I realize the impact of attitude on life. Attitude to me is more important than the facts. It is more important than the past, than education, successes, than what other people think or say or do. It is more important than appearances, giftedness or skill. इट विल मेक और ब्रेक ए कंपनी, ए चर्च और होम। हमारे पास क्या है? हम पास नहीं बदल सकते, भविष्य बदल नहीं सकते, लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव कर सकते नहीं बदल सकते। अरे हमारे घर के लोग कैसे वर्तन करेंगे वो भी हम डिक्टेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास तो क्या है? चीज तो वही की वही है, पर हाउ वी रिएक्ट टू इट, and that he is written, the only thing we can do is to play on the only string we have, and that is our attitude. I am convinced, I am convinced that the life is 10% what happens to me, but 90% how I react to it. And so it is with you, my friends. We are in a charge of our attitudes. And I mentioned meditation and spiritual practices are able to modify, change, or rewire our attitude. So, friends, I have gone a long way. I'm towards the end of my presentation. Everything we hear is an opinion, not the fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Everything we feel is a perception, not the reality. And everything is subject to change. Anitya hai sab. सो बी जजमेंटल एंड स्ट्राइव आफ्टर योर ओन ट्रूथ। मैंने मेरा खुद का सत्य निकाला है जीवन में से, और मैं उसी राह पे बहुत ही ब्लिसफुल महसूस कर रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ। आप भी अपना सत्य निकालो। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। फ्रेंड्स, that there is a problem. Lord Buddha said everybody has a problem on the world. Nobody can deny that. But for our problem there is a cause, and cause हमने define किया, हमारी desires, emotion, perversion, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ego, attitude, वो है। और there is a way, ये spiritual practices, our good virtues, our mental attachment वगैरह चीज़ों पे कंट्रोल, वो रास्ता है। और वो रास्ते जाने से, रिलीजन को फॉलो करने से वगैरह से, यू विल गेट द सॉल्यूशन। निवृत्ति हो जाएगी, निर्वाण हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, if I summarize, I have talked about 5 activities of health, 5 relationships to care for, that is marriage, children, father-in-law, parents and friends and people at working place, 5 hobbies, मेडिकल इंटरवेंशन बताए, फिलोसॉफिकल लॉज बताए जैसे कार्मिक लॉ, अटैचमेंट लॉ, अट्रैक्शन लॉ वगैरह, 5 वर्च्यूज की बात हुई, 5 मेंटल प्रोसेसेस एंड 5 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. So this is slide, you can also make a photograph from these also. Do all these, stop comparing, stop expecting, stop criticizing, start sharing, start helping, start loving. So this is the formula of happiness. If we follow all these little every day, then we'll all become happier. Give and forgive, count blessings, enjoy every moment. जैसे बात करते टाइम मैं खुद एक्सटेसी में चला गया लेक्चर देते देते. लर्न म्यूजिक, डांस, आर्ट, रीड ग्रेट बुक्स, डू स्पोर्ट एक्टिविटीज, डू गार्डनिंग, अप्रिशिएट पीपल, थैंक देम, अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड, लर्न क्रिएटिविटी, बी विद नेचर, एंजॉय ट्रेवलिंग, कंपैशन की बात हुई, अटैचमेंट की बात, एक्सेप्ट लिमिटेशन, डू योगा, डू एक्सरसाइज, कंट्रोल अटैचमेंट, कंट्रोल एंगर, ईगो, avoid greed, jealousy, and do prayer, chanting, and meditate daily.
So this is a way you can divide your 8 hours of work, 7 hours of sleep and 9 hours अपना जो है 3 HFS में डिवाइड करो. हेल्थ हाइजीन हॉबी में एक एक घंटा फैमिली फ्रेंड्स और फेथ मतलब रिलीजन में, और एक एक घंटा सर्विस सोल एंड स्माइल में. Happiness is inside my friends, and this is the address of happiness. Happiness is inside pin code 0000, religious station, morality area, charity chalk, peace society, philosophy lane, meditation hall and spiritual mansion. So do you want to be happy? ऐसा मैंने स्टार्ट किया. एक्चुअल जवाब क्या है? If you want to be happy, then just be yourself. Stay in this moment and be within yourself. And अपने अंदर खुद की तपास करो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. आपने बहुत ही डेप्थ में आज ये जो जर्नी रही हैप्पीनेस की बहुत ज़बरदस्त रही, और हम भी आपको विश्वास दिला जैसे कोरोना है कंटेजियस, वैसे हम सब भी कंटेजियस बन जाए हैप्पीनेस को लेके, और एक से हजारों तक उसको पहचाने. जैसे इस बार का थर्ड वेव था, पूरे भारत में फैल गया 15 दिन के अंदर में. हम भी आशा करते हैं कि सभी लोग इसी तरह से हैप्पीनेस को फैलाएं. जी और थैंक आपने यू जो बताया था कि थैंक यू. हैप्पीनेस इज ए चॉइस, है ना, वी हैव टू जी डिसाइड. हाँ, तो हम यस सब चॉइस बनाए. या और आपने बहुत अच्छे कंक्लूड भी किया था. हम आशा करते हैं कि आज के जो हमारे सभी श्रोतागण हैं उनको बहुत ही इसमें पूरे के पूरे सूत्र मिले हैं. और आपने ये भी बताया कि इसका 50% रोल है, इट इज विथ एटीट्यूड, बिहेवियर, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी. तो वो पार्ट को हमको बिल्कुल सही करना है. हमारे गुरुदेव ने सर एक सिद्धांत दिया था कि वैज्ञानिक अध्यात्म, कि ये जो हमारा वो उन्होंने लिखा है कि हमारा जमाना था पुराना, उसमें श्रद्धा के बल पे बहुत सारी चीजें हम कर सकते थे, लेकिन आज श्रद्धा खुद कहीं लुप्त होती जा रही है. तो ये जमाना है विज्ञान और अध्यात्म को साथ होकर चलना पड़ेगा, और तभी हम लोग इस चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे. और मैं देखा हूँ सर, आपने जो काम किया है, अपना जीवन है, यू आर रोल मॉडल ऑफ वैज्ञानिक अध्यात्म, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी. और आपसे और हमारा जो सेंटर है वहाँ ब्रह्मवर्चस्व हरिद्वार में, तो आपको इन्विटेशन भी है हम सबकी ओर से, हमारे हेडक्वार्टर की ओर से, कि हम समय निकाल के आप जरूर से हरिद्वार शांति कुंज आइए, और वहाँ के जो गतिविधियां हो रही इस तरह की, इसमें सम्मिलित हुई आप भी सर, और गाइड करिए. मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और बहुत शॉर्ट टाइम में मैं हरिद्वार जाने भी वाला हूँ. डेट नक्की नहीं है, पर मैं जरूर जाऊँगा और आश्रम में सबको मिलूँगा. और मैं आशा करता हूँ कि इस शुभ दिन से सभी का जीवन मंगलमय हो, स्वस्थ हो, आनंदमय हो, कल्याणमय हो. और अपने जो 5 कोश है उसमें जो अन्नमय कोश से लेके जो आनंदमय कोश की जो यात्रा है वो पूर्ण हो. सब लोग सुखी हो, ऐसी मैं मनोकामना और प्रार्थना करता हूँ. मेरे सारी जिंदगी का जो निचोड़ है मैंने प्रेजेंटेशन में डालने की कोशिश की है. नहीं सर, बहुत ही डेप्थ में प्रेजेंटेशन था, और आपने उसमें साइंटिफिक, मेडिकल, साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी और स्पिरिचुअल हर तरह के एंगल को इंक्लूड किया है, और आज उसकी ही जरूर है. इस तरह से एक जो बोलते हैं ना कि हॉलिस्टिक अप्रोच से ही हम लोग चेंज ला सकते हैं, क्योंकि एक एंगल से वो चीज नहीं आ सकता. सही बात. हाँ, हमारे गुरुदेव को सूत्र में बोलना चाहूंगा यहाँ भी. उन्होंने बोला था कि शॉर्ट सूत्र थे कि व्यस्त रहे, मस्त रहे, सलाह ले, सम्मान दे, सुख बांटे, दुख मटाए, मिल बांट कर खाए. इस तरह के स्लोगन हमारे जीवन में हमने बहुत उसका मतलब ऐसा लगता है कि जब सुनते हैं तो इस और आगे बढ़ने की हमको हमेशा उत्साह मिलता है. मुझे मेरे जीवन में एक सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका, कि प्रसन्न रहने के 2 ही उपाय है, अवश्य और परिस्थितियों से तालमेल बिठाए. तो ये हम जब भी मतलब कभी भी कोई चीज आती है तो हम सभी उसको हमेशा फॉलो करते हैं. सर अगर टाइम है तो 1-2 क्वेश्चन लेना चाहूंगा. वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बट आपका भी आगे जाना है तो मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहूंगा. सर एक क्वेश्चन है कि जैसे कोविड का टाइम था तो बहुत लोगों ने अपने स्वजन खोए हैं, तो बोलते हैं कि इसकी मेमोरी जाती नहीं है, तो इस तरह की जो मेमोरी है, जो अपने की दुखद मेमोरी, उसको कैसे निकाला जाए, या ऐसी कोई घटना घटी हमारे जीवन में जो हमारे मेमोरी में जाता ही नहीं है, तो हम कैसे निकालें उसको? ये बड़ा तात्विक और प्रैक्टिकल सवाल है, पर कैसे कौन से लोग हैं जिसने अपना स्वजन नहीं घुमाया है. मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने या तो अपने घर के आदमी को, या खास फ्रेंड को, या बहुत ही क्लोज रिलेटिव को खोया है. ये बात को समझने के लिए फिलॉसफी का सहारा लेना चाहिए. मृत्यु क्या चीज है, कर्म की फिलॉसफी क्या है,
और हमारे हाथ में क्या है, एक्सेप्टेंस की जो थियरी है वो, और उसको भूलने के लिए अच्छे कर्म में प्रवृत्त होना, लोगों की मदद करना, कहीं न कहीं मेडिटेशन या स्वाध्याय करते रहना, अकेले नहीं रहने का, सभी के साथ में बीच में जाके बैठने का, प्रार्थना करने का, वो ही जो है उसी में जवाब है। अकेले बैठ के वही चीज़ें याद करके दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। और जो भी मन में भावना आती है, कभी एक पेपर पे रख के डाल के वो पेपर को फाड़ के फेंक देने का, वो भी एक सराहनीय तरीका है। पर आधुनिक युग में नाम जप भी एक बहुत अच्छा सस्ता है। तो आप अच्छे से जो श्री राम लिखना है, या शरणम मम, या ओम नमः शिवाय, या जो भी ओम ह्रीम श्रीम, ऐसे जो भी आपके इष्ट देव है उनका जाप करते रहो, वो सारी चीजें उसमें से निकाल देगी। There are only few healers best in the world. One is time, second is love, एंड थर्ड इज कंपैशन। ये तीन चीज जो ऐसी है कि जो सारी चीज को हील कर देती है। टाइम जाने से ये सब चीजें चली जाएगी। तब तक प्यार से लोगों को गले मिलो और अच्छे काम, कंपैशन के काम करो। ये सब मेरी टिप्स है, जैसे आपको मैं बताऊं। सर, हमारे कल्चर में मंत्र चैंटिंग भी एक बहुत बड़ा टूल है और लगभग सभी लोग यूज करते हैं। तो आपका अनुभव और कोई ऐसा एविडेंस है सर कि मंत्र चैंटिंग की इफेक्ट कैसे होती है, क्या काम करती है? अगर हो तो बताइए सर। जरूर बताऊंगा। उसके पहले अगले वाले सवाल में, अगर आदमी को बहुत ही सिवियर एंजाइटी या डिप्रेशन हो गया है तो यू शुड सी अ साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास कंसल्टेशन करके सम ड्रग्स, मॉलिक्यूल्स, काउंसलिंग कर लेना चाहिए, वो जरूरी है। मंत्र चैंटिंग पे मैंने काफ़ी काम किया है। और मंत्र क्या है एक्चुअली, इफ़ यू सी आयन जो है इसकी संज्ञा 59 है केमिकल, और मैग्नेट क्या है वो भी आयन 59 है, ठीक है। दोनों में आयन है, पर मैग्नेट के अंदर जो एटम्स की अलाइनमेंट ऐसी हो जाती है कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। वैसे मंत्र वो शब्द ही है, पर शब्दों की जो अलाइनमेंट की गई होती है मंत्र में, वो बहुत पावरफुल होती है। अब मंत्र दृष्टा ऋषियों ने हजारों लाखों साल पहले गूढ़ कॉन्शियसनेस की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में कुछ चीजें देखी, उसको उन्होंने नीचे उतारी, आई क्लाउड में से, विश्व के यू क्लाउड में से हमारे पास लाए। जैसे अपने मोबाइल में आई क्लाउड होता है ना, ऐसा ऊपर यू क्लाउड है, उसमें से उन्हें नीचे डाउनलोड किया और हमारे लिए लाए, और उसके अंदर प्रतिष्ठा की देव की, और फिर उसको अभिमंत्रित करके इतनी बार खुद ने रटन किया, और फिर हजारों सालों से लोग बोलते आए। अब देखो, एक ही चीज अगर आप 100 बार बोलते हैं तो गलत चीज भी सही हो जाती है, ऐसा गोबल्स कहता था। तो ये तो पावरफुल मंत्र है जिसके अंदर इतनी सिद्धि है, उसके देवता है, उसकी अंदर प्राण प्रतिष्ठा की है, और इसको अलाइनमेंट करके रखा गया है। वो चीजें जब हजारों लोग लाखों साल तक गिनते आते हैं तो उसमें कितना पावर हो जाता है। अब शब्द में कितना पावर है उसमें, इमोटो नाम का हमारा एक साइंटिस्ट मित्र है, उसने जापान में प्रयोग किया है कि खाली वाटर के क्रिस्टल पे उसने पूरी रात टाइप किया, आई लव यू, आई लव यू, तो डायमंड टाइप फॉर्मेशन हुआ वाटर जैसी चीज पे। और आई विल किल यू लिखा तो बिल्कुल खतरनाक मेटालिक टाइप का हुआ। तो शब्दों की असर वाटर जैसे चीज की मॉलिक्यूल में भी होती है, तो हमारे शरीर में तो कितने द्रव्य है, तो उस हिसाब से देखो तो भी ये है। और शब्द में कितनी ताकत है, हम जानते हैं किसी को कोई गाली देता है तो कैसे वर्णन करता है, और किसी को प्यार से एक शब्द बोलते हैं तो मतलब शब्द की ताकत तो वैसे भी हमें पता है। और इन शब्दों को जो इस तरह से अलाइन करके रखा गया और साधना की गई, उसके अंदर तो जबरदस्त शक्ति है। और मैंने खुद ने मंत्र की शक्ति से कुछ ऐसे चमत्कार कोई योगी को करते हुए देखे भी है। जैसे मैं ये प्रहलाद जानी के टाइम पूरे विश्व में घूमते सारे पदार्थ को देखते रहा, तो उसमें मुझे ये भी मालूम पड़ा
कि ऐसे भी योगी होते हैं जो खाली शब्द के अनुसंधान से चीज़ों की भौतिक फिजिकल लॉज को चेंज कर डालते हैं. मतलब इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल वे. मंत्र की शक्ति में कोई आप अविश्वास मत रखना, पर सही मंत्र होना चाहिए, सही तरीके से बोलना चाहिए. जैसे मैं श्री कृष्ण शरणम मम बोलता हूँ तो शब्द बोलते टाइम उसके स्पंदन पे मेरा मेडिटेशन होता है, या कृष्ण भगवान के स्वरूप के मेरे डीटी के ऊपर जाता है, या तो उसके अर्थ पे मेरा पूरा अस्तित्व भगवान को समर्पित होता है. वो मेडिटेशन है. शब्द मंत्र ध्यान वो है. बाकी श्री कृष्ण वो मंत्र जाप है. मंत्र जाप का भी फल है, पर मंत्र ध्यान का हजारों गुना फल है. तो या तो स्पंदन पर, या शब्द के अर्थ पर, या तो उसके अधिष्ठाता देव पर आप ध्यान से गिनो तो मंत्र जाप में से मंत्र ध्यान हो जाता है, और वो करने जाइए. धन्यवाद सर. और इसी को आई लेते होप आई हुए अभी आंसर जो योर कोविड का टाइम था, यस सर, यस सर, हम लोगों ने इसके लिए ही हमारे हेडक्वार्टर से कोविड टाइम में एवरी डे इवनिंग 6:20 to 6:30 ग्लोबल प्रेयर के फॉर्म में शुरुआत किया था मंत्र के माध्यम से, कि सभी का कल्याण, सभी को जो विपत्ति आई है कोविड की खत्म हो. तो एवरी डे हम सामूहिक गायत्री करते हैं, और जिसको जो भी मंत्र अनुकूल हो या जो भी प्रार्थना करते हो, बेसिकली सेम टाइम पे सेम प्रेयर करें, और सबका हित हुए. तो इस तरह का प्रयोग शुरू किया था और अभी रहा है. हाँ, सही बात है. बहुत अच्छी बात है. मैं आप सबकी एक्टिविटी से परिचित हूँ, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विश्व में आप लोगों ने ऐसी मूवमेंट करी है. गुरुदेव की जागृति और चेतन की वजह से सब हो सका है. पर उन्होंने क्या लिखा है जो समझ में नहीं आता, कि जो आदमी साइंस की लेबोरेटरी में नहीं गया उसको उतना मार्मिक गहन रहस्य साइंस के कैसे लिख पाएंगे. वही बताता है ध्यान की शक्ति. ध्यान में आदमी परम से जब ज्वाइन हो जाता है तो पूरे का पूरा ज्ञान उसके अंदर प्रकट हो जाता है. वो एक इसका जागृत उदाहरण है. ठीक है कि नहीं? हेलो. हेलो. Yes, sir, we can hear you fine. So, Hitesh Bhaiya will join us, but I think so. We are at the end of the program, sir. We Yeah, really thank appreciate you. you coming down and sharing your knowledge, sir. It was a big pleasure for us to attend this session, as well as all those who are joined online, sir. Thank you. I'm grateful to all of you, thankful to all of you, and I appreciate your gestures. And thank you, Hitesh bhai, for nice introduction. मुझे बहुत पसंद आई सबको मिलके. सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, भगवान सबका भला करो. ठीक है. थैंक यू. Yeah, Ram, sir, thank you very much. Shall I leave? So, we conclude the session with this message. Thank you. Thank you.